I hope you know from earlier parts that nitrogen is a gas and sulfur is a solid. In fact, nitrogen is a colorless gas. Sulfur a yellow solid hai. So let's open the house for nitrogen and sulfur. Nitrogen और sulfur के बारे में कुछ तो आप already पढ़ के आ रहे हैं from the periodic table and the chemical bonding chapter. यहाँ से we continue more on its reactions and see in detail what is Haber in the contact process, what is eutrophication, what is fertilizer. Okay. Yes, Aska. So I'm starting off with my words very carefully. Each and every word said is very important, right? We have been learning about nitrogen and ammonia earlier as well. हमने काफी बातें की हैं N2 और अमोनिया की earlier parts में. हमने काफी बातें की हैं सल्फ्यूरिक एसिड की भी, acids bases salts में, right? But let's go in detail. Let's learn about this chapter more. Why? Because exam में इसके सवाल आते हैं. Very easy and straightforward questions. The more you listen, the more you get to know what we ask in the paper. So listen my words, please, very carefully. Right? Sir. By Sam. Sir, हमने electrolysis खत्म कर लिया. Yes, but electrolysis ended. Fuel cell is no more a part of the syllabus. And so what about extraction of iron? Extraction of iron is in the वो electrolysis में नहीं है. It's in the metals chapter. And aluminium का भी extraction में. Aluminium तो मैंने पढ़ा दी electrolysis. याद नहीं? Yes, sir. You sent a recorded lecture on it. Yeah. सिर्फ खाली फ्यूल सेल के बारे में सिर्फ एक चीज है जो कि वो ये है कि हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन गिव्स यू H2O, बट दैट्स ऑल. फ्यूल सेल की डिटेल सिलेबस में नहीं है. Okay. So now guys, everyone, this is nitrogen and sulfur. इसके बाद we'll do air and oxygen और फिर we'll do the metals chapter. It's how we go about. Right? So we are discussing the non-metals and then we'll do the metals. So this is my word. आज हम कर रहे हैं nitrogen and sulfur, non-metals, nitrogen and sulfur, Haber's process and the contacts process. It's a new chapter, right? Yeah. इससे पहले हमने electrolysis और redox किया. Yep. There we go. I hope you all can see my screen now. एक loves important है, please stay very attentive. Let's talk about nitrogen gas first. I must tell you that nitrogen is in group 5 of periodic table and sulfur is in group 6 of periodic table. Nitrogen and sulfur both are non-metallic elements, so ये दोनों ही non-metals हैं. Let's talk about nitrogen first. ठीक है, फिर जब ये खत्म हो जाएगा फिर हम सल्फर की बातें कर लेंगे. Nitrogen is a non-metallic element that makes about 78% of the Earth's atmosphere, right? So nitrogen जो है वो 78% है in the atmosphere. It exists as like diatomic molecules, right? As you can see, कि नाइट्रोजन एटम 5th ग्रुप में तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस हो गए, राइट? आपस में रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. दिस ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड is a very strong bond, right? So the triple covalent bond is a very strong bond. इसकी bond energy is around 944 kilojoules per mole. You know? And I must tell you that nitrogen gas is the unreactive gas in air. And this actually dilutes the effect of that reactive gas oxygen in the atmosphere. हालांकि ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है और नाइट्रोजन बहुत अनरिएक्टिव है, लेकिन इससे नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है तो वो ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी को ओवरकम कर लेती है, उसके इफेक्ट डाइल्यूट कर देती है. Why nitrogen is so unreactive, right? Now please remember that it's unreactive for 2 reasons. So nitrogen is unreactive for 2 reasons. 1,
N triple bond N is very strong. So N triple bond N is a strong bond. वो इतना strong है कि इसके reaction are usually endothermic. Right? यानी कि let's say for example nitrogen plus oxygen giving you 2NO. This reaction का enthalpy is around plus 181 kilojoules per mole. Because N ट्रिपल बॉन्ड N को तोड़ने में बहुत एनर्जी रिक्वायर होती है, सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, पूरा का पूरा आपका ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा. फर्स्ट रीजन. सेकंड रीजन, the strong N triple bond N bond means that the reactions involving nitrogen have high activation energy. So guys, the second is that the strong triple bond between N and N means that the reactions involving nitrogen will have very high activation energy. So therefore, as a result, जितने reaction nitrogen में involve, जो reaction nitrogen को involve करेंगे, चाहे अगर वो slightly exo भी हो, लेकिन बड़े slow होंगे. जिस तरह Haber's process ले लें, Haber's process में अमोनिया बनाने के लिए we require extreme conditions. So basically, अगर नाइट्रोजन की ये बॉन्डिंग हम O लेवल से बेसिकली स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, O लेवल के स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि नाइट्रोजन फिफ्थ ग्रुप में होता है, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, सो देयरफॉर इट फॉर्म्स अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. हमने पढ़ा था कि अगर डबल बॉन्ड हो तो ज्यादा इजीली ब्रेक हो जाता है एज कंपेयर टू अ सिंगल बॉन्ड. तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है वो उससे भी ज्यादा इजीली नहीं ब्रेक होना चाहिए. नहीं, हमने कब पढ़ा कि डबल बॉन्ड कैन बी इजीली ब्रोकन? हमने ये पढ़ा कि डबल बॉन्ड में से जो एक बॉन्ड ब्रेक करता है वो एल्कीन्स की एडिशन के रिएक्शन में. यस. हाँ, एल्कीन्स की एडिशन की रिएक्शन में वो जो डबल बॉन्ड का जो एक बॉन्ड है वो इजीली टूट जाता है. आई मीन नॉट एज अ कंप्लीट डबल बॉन्ड इज ब्रोकन, राइट? अ डबल बॉन्ड ऑल टुगेदर हैज is a stronger bond as compared to single bond, and the triple bond is the strongest among all, right? जो triple bond को completely cleave करना is very difficult. इसलिए nitrogen very unreactive. हम आपसे पेपर में सवाल पूछते हैं कि जो nitrogen is why N2 is unreactive, right? तो N2 is unreactive, why? Because एक तो इसमें strong triple covalent bond है, right? So therefore it has high energy of activation. Even अगर reaction exothermic भी हो nitrogen का, still it will have high energy of activation because आपको ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा. मैं आपको एग्जांपल दे रहा था हेबर्स प्रोसेस की. जब नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गिविंग यू अमोनिया, इट्स एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नॉर्मली हमारी केमिस्ट्री में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हल्के से फास्ट होते हैं, मोर फीजिबल होते हैं, लेकिन जहां पे नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है वहां पे स्टिल ये वाले रिएक्शंस की विल हैव हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. Reason because it is very difficult to break the triple covalent bond, by the way. So nitrogen is unreactive because of the strong triple bond, one, and second they have high energy of activation. और पता है नाइट्रोजन इतनी इनर्ट है कि हम इसको एजोट कहते हैं. एजोट, AZOTE, एजोट, लाइफलेस. एजोट मींस लाइफलेस, इट्स अ लाइफलेस गैस. अगर आप 78% इनहेल करते हैं तो आप 78% ही एक्सहेल कर देते हैं, राइट? नाइट्रोजन इतनी इनर्ट गैस है, बट स्टिल इनर्ट होने के बावजूद कुछ रिएक्शंस तो हैं, कुछ इंपॉर्टेंस तो है इसकी, which we'll of course we'll talk about it. सर ये BE का फुल फॉर्म क्या है? All right, the bond energy. सर आप वो हेबर्स प्रोसेस पर क्या बात कर रहे थे? मैं कह रहा था कि देखो हेबर्स प्रोसेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो नॉर्मली एक्सो रिएक्शन जरा ज्यादा फीजिबल होते हैं एंडो रिएक्शन से, उनकी लो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है यूजुअली. लेकिन अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और उसमें नाइट्रोजन इन्वॉल्वड एज अ रिएक्टेंट, तो सच रिएक्शंस विल हैव हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. होंगे एक्सो, लेकिन इनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने में मसला होगा. सर मैंने मूव ऑन में बोला सर आप इसको बता दें थोड़ा सा, अगर आप लेसन दे सकते हैं तो बेहतर हो जाएगा. हाँ बेटा, हम इस बेसिकली मैंने लिखा भी है. व्हाट आई डू इज दैट के अभी आई एम टीचिंग द फर्स्ट, क्योंकि ये चैप्टर के 2 लेक्चर्स होते हैं इसके.
First lecture, of course, I'll teach you now. Second, I'll give you, right? जो कि आप आज देखेंगे. So it is how we'll go about. So I'll tell you the strategy. So now we are clear that it is very difficult to break a triple bond between N and N. So nitrogen will only react under extreme conditions. Like, for example, let's move on. This nitrogen and oxygen in air will react together when there's a thunderstorm or lightning, right? तो होता क्या है कि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है and forms 2NO. It's called as nitrogen 2 oxide. यहाँ पे N की वैलेंसी is +2. लाइटनिंग के केस में लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन जो है वो एयर से रिएक्ट कर जाती है ऑक्सीजन से. This NO is further oxidized in air and that forms NO2. यहाँ पे N+4 it's called as nitrogen 4 oxide. ये nitrogen 4 oxide जो है ये पानी से रिएक्ट करता है in the atmosphere and forms nitric acid plus nitrous acid. This nitrous acid oxidizes in air and gives nitric acid back. So this nitric acid, it comes down as acid rain. वैसे ये नाइट्रिक एसिड सोर्स भी बन जाता है नाइट्रेट आयन को प्रोवाइड करने का सॉइल में, यानी कि एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. लेकिन लाइटनिंग अगर करती है तो N2 रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस से. लाइक आई कैन शो यू द पिक्चर एज वेल जस्ट फॉर अ गुड सेक. सो कैन यू सी दैट कि जब ये लाइटनिंग अकर करती है तो नाइट्रोजन रिएक्ट कर जाती है ऑक्सीजन से और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बना लेती है. These oxides of nitrogen will react with water and form acids, which come down as an acid rain. तो oxides of nitrogen का natural source क्या है? Lightning. I'll rewind a bit. Will react together when there's a thunderstorm or lightning, right? तो होता क्या है कि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है and forms 2NO. It's called as nitrogen 2 oxide. यहाँ पे N की वैलेंसी is +2. लाइटनिंग के केस में लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन जो है वो एयर से रिएक्ट कर जाती है ऑक्सीजन से. This NO is further oxidized in air and that. Sir, can you show the structure of NO2? I'm a bit confused that why is the charge of +4 on nitrogen in this case and +2 in the first case? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई बच्चा, दोबारा कहें प्लीज. सर ये चार्जेस के डिफरेंस क्यों आ रहा है? यहाँ पे +2 है नाइट्रोजन पर चार्ज है, बाद में +4 हो रहा है. क्योंकि redox chapter से I hope you remember like how to find the charges. जी सर, वो मुझे मेथड तो पता है, वो x पुट करके उसके बाद में कैलकुलेशन करने वाला. हाँ. I know how to calculate it. Okay, I think so. We can talk later about this because I'm a bit confused regarding this concept. ये देखो बेटा, इतना हम कहते हैं ना NO, तो ये +x, ये -2, तो x -2 is equals to 0, तो x equals to +2. When I say NO2, right? So it is +x -2, x -4 equals 0, and x equals to 4. Nitrogen dioxide की जो bonding है basically वो इस तरह होती है. It is actually a delocalized structure. It's a delocalized structure. वो delocalized बनता है तो यहाँ पे एक और यहाँ पे टेम्पररी बॉन्ड बन जाता है. लेकिन ये चीज आपको पता होनी जरूरी नहीं है. Since you asked, इसी बॉन्ड के लिए मतलब I was a bit confused कि ये इसके ऊपर तो चार्ज +3 है, तो ये दो ऑक्सीजन किस तरह बॉन्ड होते हैं इसके साथ? नहीं, वो बेसिकली यहाँ पे there is a hypothetical bond which forms and
this phenomenon is called as delocalization. इसलिए +4 आ जाता है. Okay, sir. Okay. Forms NO2. यहाँ पे N+4 it's called as nitrogen 4 oxide. ये नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड जो है ये पानी से रिएक्ट करता है in the atmosphere and forms nitric acid plus nitrous acid. This nitrous acid oxidizes in air and gives nitric acid back. So this nitric acid, it comes down as acid rain. वैसे ये नाइट्रिक एसिड सोर्स भी बन जाता है नाइट्रेट आयन को प्रोवाइड करने का सॉइल में, यानी कि एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. लेकिन लाइटनिंग अगर करती है तो N2 रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस से. लाइक आई कैन शो यू द पिक्चर एज वेल जस्ट फॉर अ गुड सेक. सो कैन यू सी दैट कि जब ये लाइटनिंग अकर करती है तो नाइट्रोजन रिएक्ट कर जाती है ऑक्सीजन से और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बना लेती है. These oxides of nitrogen will react with water and form acids which come down as an acid rain. तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का नेचुरल सोर्स क्या है? लाइटनिंग. और मैन मेड सोर्स क्या होगा? जो कंबशन इंजन, राइट? In either case, high temperature is required for them to react. And that high temperature क्यों required है? Because it has N triple bond N जो कि strong bond है and the system requires high energy for activation. प्लीज मेरे एक एक वर्ड पे गौर करें. एवरी वर्ड सेड इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज. ये नाइट्रस एसिड और जो O लिखा है ना ब्रैकेट्स में, इट मींस ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स. आप क्यों भूल जाते हैं? O इन ब्रैकेट्स मींस ऑक्सीडेशन. नाइट्रिक एसिड, आई मीन जो नाइट्रस एसिड ऑक्सीडाइजेस टू नाइट्रिक एसिड. Okay, everyone, let's move on. Let's talk about the importance of nitrogen now, right? And for that, let's talk about ammonia and ammonium compounds. So guys, ammonia is a very important compound of nitrogen. It is an alkaline gas whose formula is NH3, as you can see. So this is the dot and cross diagram of ammonia. और अब तक तो आई थिंक सिलेबस के हम बिल्कुल एंड तक पहुंच चुके हैं. अब तो आपको बहुत क्लियर होगा कि अमोनिया किन 3 रिएक्शन से हमारे सिलेबस में निकलती है. आई थिंक द फर्स्ट रिएक्शन विच वी लर्नड वाज द रिएक्शन ऑफ अ बेस विद अमोनियम सॉल्ट. ठीक है, बेस रिएक्ट करती है अमोनियम सॉल्ट से एंड दैट गिव्स यू सॉल्ट, वाटर एंड अमोनिया गैस. डू रिमेंबर? एग्जाम्पल लेते चले. लेट्स से ammonium chloride reacts with calcium hydroxide, lime water. It gives you calcium chloride plus water plus ammonia. क्या होता है कि ammonium salts are acidic in nature. Balance कर लेते हैं 2. Rewinding it a bit. Ammonia gas. Do you remember? Example, the first reaction which we learned was the reaction of a base with ammonium salt. ठीक है, बेस रिएक्ट करती है अमोनियम सॉल्ट से एंड दैट गिव्स यू सॉल्ट, वाटर एंड अमोनिया गैस. डू यू रिमेंबर? एग्जाम्पल लेते चले. लेट्स से अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर. इट गिव्स यू कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया. क्या होता है कि अमोनियम सॉल्ट्स आर एसिडिक इन नेचर. बैलेंस कर लेते हैं 2. I can show you the apparatus construction as well. So guys, can you see that ammonium chloride and calcium hydroxide when reacted together and heat as energy for activation. Now this gives you calcium chloride plus water plus ammonia. यहाँ पे बेसिकली ज़री बात है स्टीम भी आएगी, अमोनिया भी आएगी, सॉल्ट अंदर रह जाएगी कैल्शियम क्लोराइड. जब अमोनिया और स्टीम आएगी तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो स्टीम को अब्जॉर्ब कर लेगा
और फिर अमोनिया बाहर निकलेगी और अमोनिया कैन बी टेस्टेड विद डैम्प रेड लिटमस एंड टर्न्स ब्लू. Right? So first reaction is reaction of base with ammonium salts giving you salt water and ammonia gas. I mean it's a nitrogen compound. तो इंपॉर्टेंस तो है नाइट्रोजन की. लेकिन अभी मैं आपको रिकैप दे रहा हूं एक फिनोमेनन का कि अमोनिया किस किस रिएक्शन से बाहर आई है. देन गाइस सेकेंड रिएक्शन जो आपने पढ़ा इट वाज द टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन. इफ यू रिमेंबर हमने नाइट्रेट आयन को टेस्ट किया एल्यूमिनियम फॉयल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड वी हीटेड इट. तो अमोनिया गैस यहां से भी आई बाहर और ये टेस्ट था नाइट्रेट आयन का. एंड दिस वाज अ परफेक्ट रीडॉक्स रिएक्शन जिसमें एल्यूमिनियम एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड नाइट्रेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. So the second reaction as ammonia bioride, that was the test of nitrates. Then the third, the very famous reaction is Haber's process, जहाँ पे नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से and gives you ammonia. Iron as a catalyst की presence में. This is called as the famous Haber's process. So in the industry, if we have to make ammonia, we use it for, we make it by the Haber's process actually. So guys, the Haber's process, its operating conditions क्या है इसकी? What are the operating conditions for Haber's process? तो iron as a catalyst. We require 450 temperature. I must tell you it's a moderate temperature. ठीक है? And we require 200 to 250 atmospheres. That's a high pressure. ये moderate temperature है और ये high pressure है. अभी हम पीछे रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ के आए हैं और इक्विलिब्रियम भी चैप्टर पढ़ के आए हैं. ठीक है? अब जरा हेबर्स प्रोसेस को अंडर कंसिडरेशन रखते हैं. From here, जिसमें aluminium acts as a reducing agent and nitrate as an oxidizing agent. So the second reaction as ammonia bioride, that was the test of nitrates. Then the third, the very famous reaction is Haber's process, जहाँ पे नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से and gives you ammonia. Iron as a catalyst की presence में. This is called as the famous Haber's process. So in the industry, if we have to make a So the iron in the Haber's process favors the forward reaction, right? yes, तेरी जो आपने कैल्शियम ammonia, we use it for तेरे ऊपर जो कैल्शियम ऑक्साइड आपने लिया है टू ड्राई अमोनिया लिखा है यहाँ पे वाटर वेपर ड्राई करने के लिए नहीं होगा कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ताकि अमोनिया ऊपर बाहर निकले. एक ही बात है ना बेसिकली. असल में कैल्शियम ऑक्साइड असल में अमोनिया को ड्राई करें तो यानी कि वाटर को अब्सॉर्ब कर रही है. कैल्शियम ऑक्साइड इज ड्राइंग अमोनिया, absorbing water vapor. Okay. यस समझ आ गया. We make it by the Haber's process actually. So guys, the Haber's process, its operating conditions क्या है इसकी? What are the operating conditions for Haber's process? तो iron as a catalyst. We require 450 temperature. I must tell you it's a moderate temperature. ठीक है? And we require 200 to 250 atmospheres. That's a high pressure. ये moderate temperature है और ये high pressure है. अभी हम पीछे रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ के आए हैं और इक्विलिब्रियम भी चैप्टर पढ़ के आए हैं.
ठीक है, अब जरा हेबर्स प्रोसेस को अंडर कंसिडरेशन रखते हैं, देखते हैं why 450 is called as a moderate temperature and why 250 atmosphere is a high pressure. देखिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो है ली शाटलर्स प्रिंसिपल जो डील करता है परसेंटेज यील्ड के साथ, और एक है रिएक्शन काइनेटिक्स जो डील करता है रेट के साथ। क्योंकि सारी बात है बोथ फिनोमिनन्स एक वक्त में अप्लाई किए जाएंगे। जरा पहले यील्ड देख लेते हैं, ली शाटलर्स प्रिंसिपल देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी ली शाटलर्स प्रिंसिपल फर्स्ट, बिकॉज ये रिवीजन है क्योंकि मैं ये पढ़ा के आ चुका हूं, लेकिन आई एम स्टिल रिवाइजिंग इट। प्रिंसिपल राइट, we will really want that के ammonia की yield should increase, right? How? So let's see. I hope you know that the forward reaction is exothermic in nature, right? Haber's process, the forward reaction is exothermic. And what if we apply low temperatures, right? So what happens if we decrease the temperature? If we decrease the temperature, right? So क्या होगा? I think that a decrease in temperature will decrease the energy of surroundings. The reaction will go in the forward direction, right? So therefore the position of equilibrium will shift forward. So guys, when we decrease the temperature, system will go forward and the percentage yield of ammonia increases. We're applying these Shatlers. Okay? Then, what if we increase the pressure? What happens if we increase the pressure? I think reactant side पे 4 moles हैं, product में 2 moles हैं. By increasing the pressure, the position of equilibrium will shift forward, isn't it? Because system will move from more moles to less moles, and therefore yield will increase. So guys, it means that कि अगर आप चाहते हैं कि परसेंट की जो yield of ammonia बढ़े, तो you should apply low temperature, right? हमें अप्लाई करना पड़ेगा low temperature, और अप्लाई करना पड़ेगा high pressure. So I think we can increase the yield. But at the same time, you should not forget one thing, and that is reaction kinetics. अगर आपने low temperature अप्लाई किया तो रेट कम हो जाएगा. तो reaction kinetics की theory कहती है, ये theory कहती है use high temperature, high rate. So it says that higher the temperature, higher the rate. अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको रेट भी ज़्यादा चाहिए, यील्ड ज़्यादा चाहिए. अब अगर सोचें उसने अप्लाई कर दिया लो टेम्परेचर तो यील्ड तो बढ़ जाएगी, रेट कम हो जाएगा, और अगर अप्लाई कर दिया हाई टेम्परेचर रेट बढ़ जाएगा, यील्ड कम हो जाएगी. सो देयरफॉर नाउ इट कम्स अ कॉम्प्रोमाइज. सो अब हम यहाँ पे लेते हैं मॉडरेट टेम्परेचर. सो दैट्स वाई इट्स अ मॉडरेट टेम्परेचर. ना तो ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है. आई थिंक एट दिस टेम्परेचर एक्सपेरिमेंटली वी हैव फाउंड आउट that we have the highest rate and we have highest yield which can be expected in the industry. In case of pressure, the rate phenomenon says that higher the pressure, higher the rate. So therefore, I think in this case, rate कह रहा है use high pressure तो high rate होगा. I think ली शार्टलर भी वही कह रहा है use high pressure तो high yield होगी. तो अगर ली शार्टलर भी कह रहा है use high pressure, ये भी कह रहा है use high pressure, तो I think we should use high pressure. That's why this high pressure will give you a higher rate and a higher yield. Is that so? Please. Okay. So there we go forward.
So guys, we learned the operating conditions of the Haber's process, and now we know that कि नाइट्रोजन का रिएक्शन जो हाइड्रोजन के साथ है, that is formation of ammonia, is actually called as Haber's process. Let's see a picture which explains the Haber's process, and फिर I'll tell you that ये जो raw materials हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये कहाँ से आ सकते हैं, right? Let's see. So guys, here you go. सो नाइट्रोजन जो है वो आ रही है एयर से, हम एयर को लिक्विफाई करते हैं और फिर उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेते हैं, तो इट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर, राइट? तो इट इज फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर. हाइड्रोजन गैस जो है इसके कपल ऑफ सोर्सेज हैं, ठीक है? यहाँ पे नेचुरल गैस लिखा हुआ है, लेकिन आई विल शो यू नेचुरल गैस भी कैसे हो सकती है. बट हाइड्रोजन गैस Let me know when can I move on. Okay. So please wait for a bit. Done, sir. Okay. Okay. So there we go forward. So guys, we learned the operating conditions of the Haber's process, and now we know that कि नाइट्रोजन का रिएक्शन जो हाइड्रोजन के साथ है, that is formation of ammonia, is actually called as Haber's process. Let's see a picture which explains the Haber's process, and फिर I'll tell you that ये जो raw materials हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये कहाँ से आ सकते हैं, right? Let's see. So guys, here you go. सो नाइट्रोजन जो है वो आ रही है एयर से, हम एयर को लिक्विफाई करते हैं और फिर उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेते हैं, तो इट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर, राइट? तो इट इज फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर. हाइड्रोजन गैस जो है इसके कपल ऑफ सोर्सेज हैं, ठीक है? यहाँ पे नेचुरल गैस लिखा हुआ है, लेकिन आई विल शो यू नेचुरल गैस भी कैसे हो सकती है. बट हाइड्रोजन गैस कहाँ से आ सकती है? एक तो क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स, दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और तीसरा फ्रॉम नेचुरल गैस. इट्स कॉल्ड एज रीफॉर्मिंग प्रोसेस. इसमें क्या होता है, हम मीथेन को स्टीम से रिएक्ट कराते हैं, and that gives you hydrogen gas plus CO, right? तो हम यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. So nitrogen and hydrogen are extracted from these sources and then they react in 1:3 by volume. Remember हम कहते हैं ना कि 1 mole of nitrogen react with 3 moles of hydrogen. इसको हम इस तरह भी कहते हैं कि 1 volume of nitrogen react with 3 volumes of hydrogen, because for the gases mole ratio is volume ratio. And then these gases are allowed in this container where the operating conditions are applied, and then ammonia is produced. Ammonia is liquefied and collected. जो unreacted gases हैं N2 and H2, हम उन्हें रिसाइकिल कर लेते हैं और रिसाइकिल करने के बाद दोबारा इस कंटेनर में डालते हैं ताकि वो दोबारा अमोनिया बन जाए. तो कि इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि जितने उसने रिएक्टेंट्स ऐड किए हैं उससे मैक्सिमम अमोनिया फॉर्म हो जाए. सो अनरिएक्टेड गैसेस आर रिसाइकिल्ड टू प्रोड्यूस मोर अमोनिया. So that's how the Haber's process works actually. Is that so?
वैसे हम इतने भी हाई प्रेशर्स नहीं यूज़ करते क्योंकि एक्सपेंसिव हो जाता है उस वेसल को बनाना, उसको विथस्टैंड करना, राइट? तो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है, राइट? एंड इट्स अ रिस्क ऑफ द कंटेनर वेसल और द पाइप्स being exploded. That's why 200 atmosphere be somewhat a compromised pressure, but then it's a bit higher. लेकिन बहुत हाई प्रेशर हम यूज़ नहीं करते क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते. Is that so? Sorry, please come again. सर मैं कह रहा था ये अनरिएक्टेड गैसेस वाला आपको फीड कर देंगे. देखो बेसिकली जो नाइट्रोजन रिएक्ट करती है हाइड्रोजन और आपको अमोनिया देती है, आपको पता है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है, सारी N2 और H2 रिएक्ट नहीं करती, isn't it? तो हम उसको रिसाइकिल कर लेते हैं उस N2 और H2 को, वहां से निकालते हैं वेसल से, एक और मर्तबा उनको रिएक्ट कराते हैं, फिर अमोनिया बनाते हैं. तो हर दफा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है और कुछ N2 H2 बच जाती है, हम उसको रिसाइकिल कर लेते हैं सो दैट जितने हमने रिएक्टेंट डाले हैं एटलीस्ट मैक्सिमम तो अमोनिया बने. ऑलराइट, Let's move on. So guys, these are some industrial uses of ammonia. Ammonia can be used to make fertilizers, a very important use. Ammonia is used to make nitric acid, and that nitric acid can be used to make explosives like TNT, trinitrotoluene. Ammonia is also used in the making of dyes and polymers, used as a coolant in refrigerators. वैसे by the way in older days 1920s में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों यूज होते थे एज कूलेंट्स. वो अलग बात है आज हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं एज कूलेंट, बट देन इसका यूज था. और फिर अमोनिया इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल. यू कैन गो एंड सर्च ऑन अमोनिया कार प्रोजेक्ट्स के अमोनिया को हम एज अ फ्यूल भी यूज कर चुके हैं. बस इनका मेन यूज जो मैंने भी डिस्कस करना आपके साथ, इट इज एक्चुअली इन द मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, राइट? So I'm in strong reference to fertilizers now. सर प्लीज रिवाइंड कर दें. Remember, fertilizers are actually ammonium fuel भी use कर चुके हैं, करते हैं as a coolant, but then it's सर कर लिया. का यूज था. सर प्लीज एक मिनट के लिए वेट और फिर करें. ammonia is also used as a Okay. fuel. You can So second point is it is used in sorry, which point? second point is it is used in Ammonia. uh, Ammonia, it can be used to make nitric acid. It is used in explosives. It's TNT. It's सर फर्स्ट पॉइंट trinitrotoluene. है. Ammonia is also used as a coolant in refrigerators. So you can go on. Okay. go and search on ammonia car projects के ammonia को हम as a fuel भी use कर चुके हैं. बस इनका मेन यूज जो मैंने भी डिस्कस करना आपके साथ, it is actually in the making of fertilizers, right? So I'm in strong reference to fertilizers now. Remember, fertilizers are actually ammonium salts. And remember, ammonium salts
are white solids and they are sublime in nature. और ये acidic होती हैं ammonium salts, right? Farmers harvest crops to provide the world with food. Each year, millions of tons of fertilizers are spread onto fields, right, to replace nitrogen and other plant nutrients lost in the soil. Because soil exhaust जाती है nutrients से, तो हमें उसको fertilizers ज़ाहिर बात है उस पर spread करने पड़ते हैं to enrich soil with nutrients. We have natural fertilizers, let's say cow dung, right, urea, and then some man-made fertilizers called as ammonium salts. And the famous ones which we have are actually ammonium nitrate, we have ammonium sulfate, we have ammonium phosphate. They're very famous. But remember, ये जो fertilizers हैं हम इनको ऐड करते हैं सॉइल में, सॉइल पे न्यूट्रिएंट से एनरिच हो जाती है और फिर वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड यील्ड एंड अ गुड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. फर्टिलाइजर्स बेसिकली सप्लाई करते हैं मैक्रो एलिमेंट्स भी और माइक्रो एलिमेंट्स भी. जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं ये वो एलिमेंट जो कि विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, phosphorus and potassium. They are required in large quantities. और फिर माइक्रो एलिमेंट्स इनकी इंपॉर्टेंस भी, ये नहीं कि इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम आयन, जिंक आयन, लेट्स से कैल्शियम आयन एटसेट्रा. ऐसा नहीं है कि माइक्रो एलिमेंट्स अगर ना हो तो प्लांट फिर भी ग्रो कर जाएगा. नो. अब मैग्नीशियम आयन की एब्सेंस यानी कि उसकी डेफिशिएंसी विल लीड टू येलोइंग ऑफ लीव्स, राइट. तो अगर लीव्स येलो हो जाते हैं तो मतलब है कि Mg की डेफिशिएंसी हो गई है. दो मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज बट इट्स इंपॉर्टेंट. But in large quantities, which we require, of course, which plants require, are nitrogen, phosphorus, and potassium. So therefore, based on this, it's called as N, this is P, and K. So we normally talk about the NPK fertilizers. So NPK fertilizers क्या होते हैं? Which supplies all macro elements, nitrogen, phosphorus, and potassium, which are required in greater quantities by plants. हाँ, अगर कोई फर्टिलाइजर एक एलिमेंट सप्लाई कर रहा है, लेट्स से जिस तरह अमोनियम सल्फेट इज ओनली. एक होल्ड कीजिए. जी बेटा क्या कह रहे हैं आप? So which element is named after Mg? जिंक. इट इज इन 2+. मैक्रो एलिमेंट्स वो हैं जो कि लार्ज क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड है प्लांट्स को. माइक्रो एलिमेंट्स वो जो कि स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड है. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये मैक्रो एलिमेंट्स हैं. No, Haris, it is not required to make fertilizer. Basically, plants को soil में कुछ elements की बहुत जरूरत होती है, you know. तो जो कुछ elements plants को large quantities में require होते हैं, कुछ elements small quantities में require होते हैं. तो nitrogen, phosphorus और potassium large quantities में required है. Supplying nitrogen, so it's called as straight fertilizer. तो straight fertilizer क्या है? Which only supplies one macro element. Or NPK, which supplies all macro elements. So ज़ाहिर बात है farmers really prefer using NPK fertilizers. Is that so? So fertilizers enrich soil with nutrients. जहां पे ये fertilizers का use है
कि ये सॉइल को न्यूट्रिएंट से इनरिच करते हैं. बाय द वे यू नो जो नाइट्रोजन है इट्स रिक्वायर्ड फॉर गुड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. फॉस्फोरस पोटेशियम आर रिक्वायर्ड फॉर द गुड ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स एंड रूट्स. तो ये इंपॉर्टेंस काफ़ी हाई है इनकी. ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी जो है बेसिकली इट मे रिजल्ट इन बैड यील्ड ऑफ क्रॉप्स. लेकिन जहाँ पे इनकी इतनी इंपॉर्टेंस है वहाँ पे अगर फार्मर जो है एक्सेस फर्टिलाइजर यूज कर ले तो इट मे लीड टू अ प्रॉब्लम कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन. What is active eutrophication? It is unintentional enrichment of algae over the surface of water. Eutrophication एक environmental problem है. ये nitrates can be washed or leached out of the soil. It's by rain into groundwater. ठीक है, और फिर these find their way into rivers and lakes. लेकिन जहाँ पे let's say for example अगर ये soil है और ये plants उगे हुए हैं, right? और let's say इसके आसपास let's say there's a pond, इसमें fish भी हैं, farmers ने fish भी रखी होती हैं. ठीक है, water stagnant है इस टाइम के ऊपर. अगर आपने एक्सेस फर्टिलाइजर डाला है इस वाली ग्राउंड के ऊपर तो रेनफॉल से क्या होगा, जो फर्टिलाइजर सॉइल में जाता है वो तो चला गया, जो नहीं गया इट विल लीच्ड इट विल बी लीच्ड वे इनटू द नियर बाय पॉन्ड, लेक और रिवर. जैसे फर्टिलाइजर यहाँ पे लेक या पॉन्ड में आएगा, राइट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट एवरीवेयर. इवन योर माउथ हैज 5 मिलियन बैक्टीरिया लिविंग. अगर वो नहीं होंगे तो आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते इस अर्थ के अंदर. So therefore यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें algae is one of them. Algae is actually a kingdom of plant. जैसे उसको फर्टिलाइजर मिलता है तो algae की unintentional enrichment होती है, तो एक वक्त आता है कि इसकी सारी surface it turns green. You might have seen some green algae over stagnant water. ठीक है, जब इसकी सर्फेस ग्रीन हो जाती है तो फिर इसके बाद आपके प्रॉब्लम्स स्टार्ट राइजिंग. हाउ द प्रॉब्लम्स राइज, तो वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप टू एक्सप्लेन व्हाई, बिकॉज दीज स्टेप्स नीड टू बी एक्सप्लेन इन अ सीक्वेंस टू स्कोर द मार्क्स. सो गाइस, here it goes. So what happens is कि जैसे the algae blooms over the surface of water, right, sunlight is blocked. फिर सनलाइट ब्लॉक होगी, अंदर प्लांट्स भी हैं, जाहिर सी बात है. ठीक है, प्लांट्स खुद ही उग जाते हैं नीचे. वैसे भी वाटर में आई मस्ट टेल यू 75% लाइफ एग्जिस्ट्स इन अंडर वाटर. तो प्लांट्स होते ही हैं. जैसे ही प्लांट्स को लाइट नहीं मिलेगी प्लांट फोटोसिंथेसाइज नहीं करेंगे एंड द प्लांट्स डाई. राइट, अब बैक्टीरिया हर जगह पे है तो बैक्टीरिया विल फीड ऑन दिस ऑर्गेनिक मैटर बाय एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. तो जो ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व हुई होती है वो उसको भी यूज़ कर लेता है. जब ऑक्सीजन यूज अप होगी तो फिश को ऑक्सीजन मिलेगी एंड फिश डाई. And then the whole ecosystem is disturbed and this water becomes useless, right? So eutrophication is a big problem जो कि excess use of fertilizer से होती है. इसलिए farmers को educate करना चाहिए कि excess fertilizer डालने का नुकसान है, फ़ायदा नहीं है. और पता है एक और भी इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. I must tell you, these nitrates have also been detected in our drinking water, especially in agricultural areas. And the people are worried that nitrates in the drinking water may cause blue baby syndrome. That is, what is the blue baby syndrome? Then when, a baby, it does not have oxygen in his blood, and it may lead to stomach or the intestinal cancers too. But लेकिन some others argue that links between nitrates and diseases have not been proven, and that recommended nitrate levels are set unrealistically low. But then still, please remember, nitrates should not be present in drinking water in great amounts. Why? Because they have some bad effects on health. Okay.
Interesting. Let's move on. Let's see some important uses of nitrogen. So guys, nitrogen uses, तो हम ये टायर जो हवा भरते हैं, now we prefer using nitrogen actually. ये सीक्वेंस में याद रखने प्लीज, क्योंकि आपने सीक्वेंस पेपर में लिखने होते हैं. सर जो फर्टिलाइजर्स का जो फर्टिलाइजर जो अंडरग्राउंड जाते हैं उनकी वजह से पॉन्ड के अंदर एल्गी जमा होती है. यस. That's Okay. Okay. Interesting. Let's move on. Let's see some important uses of nitrogen. So guys, nitrogen uses, तो हम ये टायर जो हवा भरते हैं, now we prefer using nitrogen actually. It's also used to make ammonia, Haber's process, and then to make nitric acid, right? Nitrogen is used as coolant with hydrofluorocarbons in the air conditioned and refrigerators. Nitrogen is also used to fill food packets. Lays के जो ये जो आपके चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं उसमें लग आपके हवा भरी, वो असल में N2 गैस होती है. It keeps the food fresh because अगर आप एयर भर देंगे तो ऑक्सीजन जो फूड से रिएक्ट कर जाएगी और ऑक्सीजन फूड को ऑक्सीडाइज कर देगी. आप कहते हैं ना फूड ख़राब हो गया, मतलब फूड ऑक्सीडाइज हो गया, तो अगर वहाँ पे नाइट्रोजन होगी तो सारी बात है फूड फ्रेश रहेगा. It is also used to fill the bulbs. ठीक है, argon and nitrogen both are used as a gas to fill bulbs too. So nitrogen की importance भी है, although inert है लेकिन इसके uses भी हैं हमारे पास, और ज़्यादातर इसकी inertness ही इसके uses बन जाते हैं, apart from forming ammonia and nitric. सल्फर डाइऑक्साइड भी यूज होती है फूड को फ्रेश रखने के लिए. यस. ओके, थैंक यू सर. Acid, you can say, right? जहाँ पे यूजेस है नाइट्रोजन गैस के, वहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो कि ऑक्साइड्स भी बना लेती है, तो फिर ऑक्साइड्स के डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे पास. लेट्स सी दैट टू. So what is the third point? So guys, oxides of nitrogen as pollutants, I'm talking about NO/NO2, right? Excuse me, sir. Remember that these oxides of nitrogen naturally are formed during life. So what was the third point? एक सेकंड. It is used to make nitric acid. Used to make nitric acid. सर हमें एक्सप्लेन करने को तो नहीं किया ना, बस सिर्फ मेंशन करने को किया. Yes, absolutely. I mean, just to state. ओके. राइट? जहाँ पे यूजेस है नाइट्रोजन गैस के, वहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो कि ऑक्साइड्स भी बना लेती है, तो फिर ऑक्साइड्स के डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे पास. लेट्स सी दैट टू. So guys, oxides of nitrogen as pollutants, I'm talking about NO/NO2, right? Remember that these oxides of nitrogen naturally are formed during lightning process, right? And from the combustion engines too. I must tell you that these oxides of nitrogens are pollutants and they cause acid rain and photochemical smog. Nitrogen oxides
actually also catalyze the reaction of sulfur dioxide into sulfur trioxide in the air as well, you know. So basically ये जो नाइट्रोजन है ये बेसिकली रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से और आपको NO देती है. दिस NO ऑक्सीडाइजेस इन एयर and gives you NO2. This NO2 is an acidic gas. I must tell you, NO is a neutral gas. And then this NO2 reacts with water in the presence of excess oxygen and that gives you nitric acid. अगर आपने यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लिखी, ठीक है, फिर आप यहाँ पे नाइट्रिक प्लस नाइट्रस बनाएंगे. ठीक हो गया. सो क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास नाइट्रिक एसिड बन जाता है and this nitric acid, it actually comes down as acid rain. So this comes down as acid rain. Now why acid rain is a nuisance? तो ये nuisance क्यों है? ठीक है, I hope आपको O level से पता होगा कि acid rain जो है why it is nuisance basically. So acid rain क्या करती है? It disturbs pH of soil. It corrodes buildings. Made of limestone, right? It affects marine life. I must tell you कि 1988 में मैक्सिको में एसिड रेन हुई थी जिसकी pH 1 थी. It was a wrath of God. अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें कभी इस ऐसे वक्त में लेके आए जिस तरह आजकल वी हैव COVID, तो अल्लाह माफ़ करे. इट्स ऑल्सो राथ ऑफ गॉड, राइट. अल्लाह ताला से रहम मांगना चाहिए, अल्लाह ताला अपना करम करे इंशाल्लाह. सो बेसिकली एसिड रेन इज़ ए न्यूसेंस. खाली नाइट्रिक एसिड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि आइंदा हम वो भी पढ़ेंगे. लेकिन अभी के लिए सिंस हम नाइट्रोजन पढ़ रहे हैं एज अ चैप्टर, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट नाइट्रिक एसिड एज अ मेन कंपाउंड of acid rain, but then sulfuric acid is also there. So guys, this was nitrogen and ammonia, the importance of fertilizers, the use of nitrogen and ammonia further.